अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। खैरियत से होंगे बच्चों। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Today we are going to discuss about the lesson number 2, surrounded by trash, यानी कि कूड़ा किचड़ से घिरा हुआ हमारा मुआशरा. First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter, that what is the trash or human waste materials. The waste human generates waste has been detrimental to our environment for quite some time now. Humans are generating too much trash and cannot deal with it in a sustainable way. Waste that is not biodegradable and cannot properly be recycled is filling our ocean and landfill. Let's take plastic waste as an example. A recent study found that of the 6.3 billion metric tons of plastic waste has been produced, only 9% of that plastic waste has been recycled. It means that plastic pollution and how you can help reduce your own waste. In 2017, for instance, the Environmental Protection Agency calculated that the total generation of municipal solid waste in the United States just that year was 267.8 million tons. The way we dispose of waste is troubling. What is worse, in this decade alone, it would seem that waste disposal has become more careless. What we have failed to do is to put into action the ideas we believe will help us mitigate or adapt to climate change. Case in point, the trash that is dumped in landfills releases methane gas. Taken one step further, open landfills were found to represent 91% of all landfill methane emission. The burning of large open piles of trash in various parts of the world emit dangerous level of carbon dioxide, a greenhouse gas that is heating up our planet. Researchers have calculated that approximately 40% of the world's trash is burned in this fashion, posing large-scale risk to both our atmosphere and the people that live in near these burning sites. So, students, collectively, we are concluding that the more producing trash is producing more problem for this world. So, we have to reduce the trash in our society or environment. This is a brief introduction about this chapter. Now we move on to the translation of this chapter. First of all, एक स्टोरी टाइप बताई हुई है आपके सामने पिक्चर्स में देखें. एक लड़का है जो कह रहा है, हु केयर्स, आई एम हेयर फॉर अ लिटिल वाइल ओनली, नो वंस लुकिंग एंड द ट्रैश कैन इज टू फॉर अवे, आई डिड नॉट ड्रॉप इट, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज़ आर प्रॉब्लम आई सपोज. बेटा देखें, यहाँ पर एक स्टोरी बताई कि अगर हम पार्क में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मतलब कि मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आया हूँ तो मेरा इसको कचरे को उठाने के लिए कोई काम नहीं है. फिर कह रहे हैं कि कोई भी नहीं देख रहा तो हम इसको कचरे को फेंक सकते हैं यहीं पे. फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पिक्चर में बताया जा रहा है कि मैंने इसको नहीं फेंका तो मैं इसको क्यों उठाऊँ. और नेक्स्ट पिक्चर में कहा जा रहा है कि मतलब कि हम मेरा ख्याल है कि ये हमारा एक मसला है. ठीक है, तो एक प्रॉपरली एक ट्रैश के बारे में बताया गया कि कैसे जो है कुछ लोग क्या सोचते हैं सोसाइटी के अंदर और कुछ लोग जो है क्या सोचते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ, हैव यू एवर बीन टू अ पार्क, टू अ रिवर साइड और अ बिजी मार्केट एरिया. Lots of people come here for fun, for work, and for entertainment. And when they go back home,
they leave behind a mountain of smelly trash and rubbish. क्या आप कभी किसी पार्क, दरिया के किनारे या मसरूफ़ मार्केट गए हैं? बहुत से लोग यहाँ सैर तफरी, कामकाज और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आते हैं, और जब वो वापस घर जाते हैं तो वो बदबूदार कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर अपने पीछे छोड़ जाते हैं। स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन अ बॉक्स, व्हाट थिंग्स डू यू थ्रो इन द पार्क एंड मार्केट एरिया? आप पार्क या मार्केट एरिया में क्या चीज़ें फेंकते हैं? सो द आंसर इज़, वी थ्रो सिगरेट बट्स, broken bottles, plastic bags, chips wrappers, half eaten food, and rotten fruits carelessly in the parks and market areas. हम पार्क्स और मार्केट एरियाज़ के अंदर सिगरेट फेंकते हैं, टूटी हुई बोतलें, या फिर प्लास्टिक के बैग फेंक देते हैं, या फिर चिप्स के रैपर्स, या फिर आधा खाया हुआ खाना, या फिर कोई गले सड़े जो फ्रूट होते हैं उनको फेंक देते हैं। There are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym related to the paragraph number 1. First one, trash, यानी कि कूड़ा क्रिकेट, waste. Fun, मज़ा, प्लेयर. Rubbish, गंदगी, garbage. Smelly, बदबूदार, means stinky. Behind, पीछे, at the back of. Busy, मसरूफ, engage. Entertainment, तफरी, player. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 1. First one, trash. Don't throw trash here. Fun. He seems to be having fun. Rubbish. The streets are filled with rubbish. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं। बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस फॉर्मेशन की। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को याद रखना है, मीनिंग्स और सिनोनिम्स को भी याद करना है ताकि आपको ट्रांसलेशन आसान लगे। Paragraph number 2. Littering has become a common habit and the evidence is everywhere around us. If we go to any public area, we find cigarette butts, broken bottles, plastic bags, chips wrappers, half eaten food, and rotten fruits thrown carelessly on the ground, parking areas, and sidewalks. गंदगी फैलाना एक आम आदत बन चुकी है और इसके सबूत हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं। अगर हम किसी भी अवामी जगह पर जाएं तो हमें ज़मीन पर, पार्किंग की जगहों पर और फुटपाथों पर लापरवाही से फेंके गए सिगरेट के टुकड़े, टूटी हुई बोतलें, प्लास्टिक के थैले, चिप्स के लिफाफे, बचा कुचा खाना और गले सड़े फल मिलेंगे। Wherever we go, we create a mess and we do it all the time without even considering our actions and the consequences. What does all this tell us about our civic sense and social values? हम जहाँ कहीं भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं और हम हत्ता के अपनी हरकत और उनके नताइज पर गौर किए बगैर तमाम वक्त ये काम करते हैं। ये सब हमें हमारे शहरी शऊर और माशरती इक़दार के बारे में क्या बताता है? There is a question in box, how do these places look like? ये जगहें कैसी दिखती हैं? So the answer is, these places look very dirty and untidy. They no longer appear to be parks or market places. ये जगहें बहुत ही गंदी और बदबूदार लगती हैं और ये किसी भी तरह से पार्क्स या मार्केट प्लेसेस नहीं लगती। There are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym related to the paragraph number 2. First one, evidence, means सबूत, proof. Rotten, गला सड़ा, decomposed. Create, पैदा करना, produce. Mess, गंदगी, अबतरी means heap. Consider, ख्याल करना, think about. Action, काम करना, steps. Consequences, नताइज, results. Values, इक़दार, ethics. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 2. First one, evidence. I don't have any evidence. Rotten. The fish is rotten. You must not eat it. Create. We don't want to create any new problems. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं। बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है। इनके सिनोनिम्स, मीनिंग्स को याद रखना है और वर्ड्स के स्पेलिंग्स को भी याद करना है। Now we move on to the paragraph number 3. It is a sad fact that people usually do not feel guilty about littering in areas where garbage is already scattered around. Many people think
that it is right to litter as it is duty of sweepers to keep the area clean. Some people think that they stay for a short while and it does not matter what condition they leave the place in. ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि लोग आम तौर पर उन मकामात पर कूड़ा करकट फेंकने में अपने आप को कसूरवार नहीं समझते जहां पहले ही कूड़ा करकट बिखरा हुआ पड़ा हो। बहुत से लोग समझते हैं कि कूड़ा करकट फैलाना बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि ये खाकरोबों का फ़र्ज़ है कि वो इलाके को साफ रखें। कुछ लोग समझते हैं कि वो थोड़े से वक्त के लिए ठहरते हैं और चूंकि वो सिर्फ चंद घंटों के लिए तफरी कर रहे हैं तो ये बात अहमियत नहीं रखती कि वो जगह को किस हालत में छोड़कर जाते हैं। Others feel too lazy to walk up to a trash can to deposit rubbish in it. Many people argue that there is already so much rubbish on our streets that one more shopping bag or juice bottle would really make no difference at all. दूसरे इतनी सुस्ती महसूस करते हैं कि वो कूड़े को कूड़ेदान में डालने के लिए उस तक चल कर भी नहीं जा सकते हैं। बहुत से लोग ये दलील देते हैं कि हमारी गली में तो पहले से ही इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है और एक मज़ीद शॉपिंग बैग या जूस की बोतल से हकीकत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन बॉक्स, व्हाट आर पीपल्स ओपिनियन अबाउट लिटरिंग? कूड़ा करकट के बारे में लोगों की क्या राय है? सो द आंसर इज पीपल थिंक दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स टू कीप देयर स्ट्रीट्स एंड एरियाज क्लीन, सो दे हैव द राइट टू थ्रो ट्रैश वेयर एवर दे लाइक। लोग ये सोचते हैं कि ये गलियों को या एरियाज़ को साफ़ करना सिर्फ़ और सिर्फ सफाई करने वालों की ज़िम्मेदारी है और उनका ये फ़र्ज़ है या उनका ये काम है कि वो जहाँ चाहे वहाँ पे कचरा या कूड़ा करकट फेंक सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 3. First one, usually, आम तौर पर, normally, guilty, मुजरिम, कसूरवार, to blame, scattered, बिखरे हुए, disorganized, matter, मामला means affair, condition, हालत means state, lazy, काहिल, idle, deposit, डालना, installment, argue, दलील देना, claim. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 3. First one, usually. I usually walk to school. Guilty. He was declared guilty. Scattered. The police scattered the disorderly crowd. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं, बाकी की आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है और इनको याद रखना है। Now we move on to the paragraph number 4. Trash that is left around us attracts germs, flies, mosquitoes, and insects. Rotten fruits and decaying foodstuffs emit poisonous gases and bad smell, which are extremely harmful. गंदगी कूड़ा जिसे हमारे इर्द गिर्द छोड़ दिया जाता है जरासीम, मक्खियों, मच्छरों और कीड़े मकोड़ों को मुतवज्जा करता है। गले सड़े हुए फल और ख़राब होती हुई खाने की चीज़ें जहरीली गैसें और बदबू छोड़ती हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये पूरे इलाके को गंदी शक्ल सूरत में बना देता है। देयर इज़ अ क्वेश्चन इन बॉक्स, हाउ डज़ ट्रैश अफेक्ट द आवर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट? कूड़ा करकट जो है वो हमारे माहौल और सेहत को कैसे जो है असरअंदाज होता है उस पर। सो द आंसर इज़ ट्रैश मेक्स आवर इन्वायरमेंट अनटाइडी एंड अनहाइजीनिक. It attracts the germs, flies and mosquitoes which causes to spread different diseases. कूड़ा करकट जो है हमारे माहौल को गंदा और बदबूदार बना देता है जिसकी वजह से मक्खियाँ, मच्छर और दूसरे हशात वगैरह या जरासीम जो है वहाँ पे आते हैं और भी मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करते हैं। There are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym related to the paragraph number 4. First one, attract, अपनी तरफ खींचना, charm, decaying, गलने सड़ने का अमल, मीन डिकम्पोजिंग, एमिट, खारिज करना, डिस्चार्ज, एक्सट्रीमली, इंतहाई मीन्स इमेंसली, वर्स्ट, बदतरीन, डिमोलिश, हार्मफुल, नुकसानदेह मीन्स डैमेजिंग, एंटायर, तमाम या मुकम्मल मीन्स कंप्लीट, स्टफ, सामान, मटेरियल. There are some difficult words and their sentences related to the paragraph number 4. First one, attracts. The city needs to attract more industry. Decaying. The apple has begun to decay. Emit. She was heard to emit a cry of horror.
बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं। बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करिएगा कि आसान अल्फाज के अंदर सेंटेंसेस बनाए जाएं और इनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स को भी आपने याद करना है। पैराग्राफ नंबर 5, littering shows that people lack civic sense and have little interest in preserving their environment. The truth is that if we make a little effort to dispose of garbage, our surrounding will be clean and safe. गंदगी फैलाना जाहिर करता है कि लोगों में शहरी ज़िंदगी की समझ बूझ का फुकदान है, अपने माहौल को महफूज रखने में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं। सच ये है कि अगर हम कूड़े को ठिकाने लगाने की मामूली सी कोशिश करें तो हमारा माहौल साफ सुथरा रहेगा। देयर इज़ अ क्वेश्चन इन बॉक्स, व्हाट सॉल्यूशन डज द राइटर गिव टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। जो ऑथर है उसने क्या मतलब के दिया या राइटर ने क्या उसका हल पेश किया है अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए। So the answer is, according to writer, we should take the responsibility upon ourselves to keep up our environment clean. We should always throw trash into trash bin. राइटर ने कहा है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने माहौल को साफ रखना चाहिए और कूड़े करकट को हमेशा कूड़ादान में ही डालना चाहिए। There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 5. First one, lack mean कमी, deficiency interest, दिलचस्पी intrigue, preserving महफूज बनाने वाली protect, environment माहौल habitat, properly मुनासिब तरीके से correctly, sense समझ बूझ feeling, garbage गंदगी means waste, safe महफूज means secure. There are some difficult words and sentences related to the paragraph number 5. First one, lack. He died from lack of oxygen. Interest. Baseball is an interesting sport. Preserving. Vinegar is used in preserving food. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं। बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी आपने खुद से घर में प्रैक्टिस करनी है, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं और इनके जो मीनिंग वर्ड्स के जो स्पेलिंग्स को आपने याद करना है, मीनिंग्स को याद करना है और सिनोनिम्स को भी याद करना है। इससे आपकी ट्रांसलेशन करने की जो पावर है वो मतलब कि इजी हो जाएगी, आप इजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकेंगे, आपकी वोकेबलरी इन्हांस होगी। बेटा आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी अच्छे तरीके से। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।